that time constraint. Third, I am sorry, is DNA evidence acceptable in India? Though I am not confirmed, I will try my best, but I think there are some judicial decisions in Pakistan where still the main weightage is given to the medical legal examination report on the finding of the physical signs and symptoms rather than confession, rather than the scientific evidence of DNA confirmation. It is considered as a corroborative evidence, but not as a confirmatory evidence. I may be wrong, I will recheck it, but kindly, if you guide us on these points, then I will. Uh, uh, I am sorry that before participant I asked the question, but these are the few things on which I am working here as Surgeon Medical Legal Punjab. That's why I take that opportunity. Again, I apologize from the participant that I asked the questions first. Thank you, Professor Malik. Number one, you asked who goes to the court. So as I said, it is we, forensic medicine assistant professor, who goes to the court. And 99% of the times, courts are happy because the report is prepared collectively, and it is the collective wisdom of all three medical experts who gave the report. However, sometimes the defense might ask specifically for gynecologists to come. That time only gynecologist has to go. And they are very happy because gynecologists believe that this, except medical legal people, all other specialists believe that ये medical legal work extra झंझट है, extra job. They are not happy to go to court. But therefore, when we go to court, they are happy and they are very happily participating in this program wherein they are the part of team. As I said, gynecologist, forensic medicine, and psychiatrist. Second thing, you are absolutely right. Like 72 to 90 hours is the internationally accepted guidelines. And our guidelines also say that. But we have my colleagues in other part of my state, even country, who will collect swab even after 3 months. The girls comes after 3 months, 3 महीने पहले हुआ था, नहीं इसी protocol में तो लिखा हुआ है collect करना है, but we have to teach them that no, after 90 hours it is of no use. Remember, when you send one swab of vagina, which is 100% not going to give you yield DNA, then government spends 1500 rupees in just knowing whether there is DNA in it. And if there is DNA, sequencing and all over here, I'm sure even in Pakistan, cost 10,000 rupees to the government. So one unrequired collection of swab results you to 1500 to 2000 rupees waste of expenditure. So we have to be careful what to collect and equally careful what not to collect. Because there were cases wherein it was a molestation ka case and they went to medical officer, they collected vaginal swab. So yes, we need the training of these medical officers that you should know what to collect unless there is specific history. Otherwise, not only vaginal swab, there are cases where they will collect oral swab and anal swab also. And it is not required. There is not even a history of that. So you have to remember that government will be spending 1,500 से 2,000 rupees in just knowing whether there is DNA or not. So we have to be very sensitive about what to collect, how to collect. Second thing about collection, sir, I take lecture on DNA. So we have to remember that paper is our friend and plastic and polythene is our enemy, number one. Always collect in paper envelopes, because you remember the famous case of, what was his name? Bill Clinton. So Monica Lewinsky gave her gown after several years, but she had preserved that. And so if you have
air dried it and kept it, maybe after 2 years also you will get DNA. But if you have not air dried it and put it in a plastic or polythene bag, which still happens in even in India in many parts, within a week, इसमें fungus आएगा and it will be of no use. So What whenever you are about test collecting, tube? What about putting that swab in a test tube? yes, again, if you are putting in a test tube and within 12 hours it is written to the FSL, good. Otherwise, there are, sir, swab dryers available in the market. You should have swab dryers. You collect swab, dry it, and then seal it. Otherwise, that is also gets spoiled. Now, you ask your FSL guys, they will be बहुत दुखी होके बताते हैं कि if 100 samples are sent by police and us, not more than 10% of them yield DNA. Not because, and most of the times it is due to faulty preservation and packaging or faulty selection of the samples. So this is a very sensitive topic that you have this thing, taken, sir, and it's very important. Third thing about DNA, we have it's acceptable evidence, and if there is, see, as I said, most of the time it is my word versus your word. Girl says I was raped, he says I have not. In that case, if you get the accuser's DNA, then it's very well accepted. In murder cases now, we have almost stopped doing blood grouping. It's the DNA that we are doing on the clothes of the victim, on the weapon, and even the clothes of the accusers, and it is very well accepted over here. And we have like in my state, which is like 10 crore का होगा हमारा state, इसमें we have around 12 big laboratories of DNA. So but in UP there are only 2, which is 22 crores. So there is disparity, but its use is increasingly it is being used in India, and it is accepted in the court. But as I said, sir, DNA in sexual assault is my another lecture that I always take, wherein what to do, what not to do, what to collect, what not to collect, and how to collect, how to preserve, how to package and seal and send, and maintaining chain of custody and sanctity of evidence is another thing that our lady medical officers have to be sensitized about, because they cannot challenge the technology, they challenge the sanctity of evidence, chain of custody. So documentation and maintaining that becomes important. So what was your third question, sir? I actually suppose I have myself supervised examination of a minor girl that was a absent bleeding, obviously, but its DNA test proved to be negative. And police officials visited me, of a high rank police officials. I at that time called my lady doctor, who was MPhil forensic medicine at that time, and he said that there is some fault in your examination. Fortunately, for the academic purpose, maintaining the confidentiality, we have taken the pictures. We have shown them the clothes, staining of the blood. We have shown them the tears. And they said, why did not DNA test prove to be positive? I asked them one question. When did you take the assailant in custody? Unfortunately, he was Mammu and uncle. And he said, Ji, immediately at that evening, Manika, did you get his medical legal examination? It's 15 days past. And he was stunned on my question. And he tried to, am I audible? Yes, sir. Very much. Yeah. And I said, okay, he may be suffering from azoospermia, oligospermia, and you are bound as per police rules 1934 to get the medical legal examination of assailant
and take the sample from that his private parts. So I am worried about that, and I have to face the problem. I will answer your question, sir. I will answer your question. I will tell you. I have seen these 5-6 cases. Always remember, whenever there is rape of a minor with vaginal tear, there is rarely ejaculation, because even the genital, the penis of accused also goes through mechanical insults, and rarely you find ejaculation. So how the bloody police officer thought that there was 100% ejaculation? Number one. Number two, we always tell, like, our examination of victim lecture is followed by examination of accused, because what is the purpose of medical legal examination? To connect victim with the accused with the victim, victim with the crime scene, accused with the crime scene. Now, in minor cases, whenever and wherever you have vaginal tear, immediately we must examine the accused as soon as possible. Not only that, अगर 3 दिन के बाद आया, we had asked for his undergarments, उसमें से भी victim के blood मिलते हैं, and that, suppose a swab around penis from the accused, in that I get blood of the victim and it reveals DNA. It is as good as getting sperms in the vagina of the victim, because you have related the two, right? So ये प्रॉब्लम क्या है सर, ये पुलिस वालों का भी, इनको आधी चीज पता रहती है, and then they try to question us. Now we take the lectures in, I will encourage कि हमारे forensic medicine के लोग, you have to do this. देखिए, विक्टिम अगर छूट जाएगा तो मेरा ICR खराब नहीं होगा, मेरा प्रोपोर्शन तो नहीं जाएगा, लेकिन तेरे को प्रॉब्लम होगा, because people accuse police, not me. So, and they are very happy. We go to Judicial Academy, sir. Some of my conferences में sitting high court judges have come as delegates. They say, Dr. Saab, even we need to learn, but we have to approach them and say, ज्ञान जो होता है ना सर, knowledge, इसके सभी भूखे होते हैं. Alhamdulillah, I myself is a resource person of Punjab Judicial Academy. Great, and sir. Police and Prosecutor Department. I will request now, thank you very much. There are many questions, but I will request the participant, please ask the questions, because basically this presentation is for the women medical officers. Yes, Tala, please manage. Yes, any question from the participant? हेलो जी डॉक्टर साहब अपना तारफ कराएं पहले. जी सर, मैं डॉक्टर अतिया मरियम, DH मुहल्ला पाल से. जी तो सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है. जिस तरह से हम लोग जो रेप रजिस्टर है उसके ऊपर लास्ट पे सेक्शन होता है फाइनल ओपिनियन का, तो समटाइम्स ये होता है कि हमने कुछ जो ओपिनियन है वो PFSA की रिपोर्ट से पहले लिखना होता है कि अनमैरिड जो कुछ बच्चियां होती हैं उनमें कुछ केसेस इस तरह के होते हैं कि मतलब वो रेप तो हुआ होता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि वो फर्स्ट टाइम होता है, ऑलरेडी मतलब वो वर्जन नहीं होती हैं. तो और उसके अलावा जो मैरिड होती हैं उसमें भी, क्योंकि वो जाहिर बात है एक्टिव होती हैं, तो उसमें हमने PFSA की रिपोर्ट आने से पहले क्या एक कंसाइज सा जो है वो फाइनल ओपिनियन लिखना होता है. देखिए ये have you understand the question or I should elaborate it? हाँ सर, थोड़ा बता दीजिए. मुझे तो थोड़ा जो समझा है कि जब वर्जिन या अनमैरिड लड़कियां आती हैं and there is no recent tear of, there is evidence of forceful sexual intercourse, not recent tear of the hymen, then and they have to give report. ये बाकी लोगों को अनम्यूट करें प्लीज. बाकी सब मुझे जो इन्होंने क्वेश्चन कर लिया वो भी अपने आप को जो है वो म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें. अच्छा सर, मैं डॉक्टर मकबूल सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट कर लें ताकि ये सवाल का जवाब सबको समझ आ जाए. प्रोफेसर हारिश, मैं उसको एलैबोरेट ऐसे करता हूँ कि जो am I audible? Yes.
कि जो विक्टिम है, हम ये एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि वो है तो अडल्ट और वो हिस्ट्री दे रहा है कि वो अनमैरिड है, लेकिन जो फाइंडिंग्स हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की वो इस चीज को उसमें आर नॉट सजेस्टिव ऑफ दैट कि शी इज अनमैरिड, because the parameter that has been described in the book, that is the intact hymen. Now the High Court, Supreme Court, both in India, Pakistan and in Bangladesh has given the verdict that please don't comment on the hymen. Comment only on the injuries. Now the victim is unmarried, giving the history of sexual assault or rape, but physical findings, any redness, tear, laceration, abrasion or discharge is not present. The swab has been taken. What should she report? Because PFSA, Punjab Forensic Science Agency, requires that copy of the preliminary report should be sent along with that swabs. Wherever there is no physical finding, only history is there. And same is the case when married female came, or she is already married having kids, but there are no physical signs. Now she has taken the swabs. Now before the report of the swab, what should she write in the column of opinion in her preliminary report? That she needs the guidance. Hello, am I audible, sir? Ji, sir, you are audible. Yeah. So what happens, as you said, that it has been abundantly made clear by the different courts, including every comment on the sexual history of the survivor. Number one, what is the purpose of medical legal examination? You don't have to give the character certificate to that girl. Yes. Your purpose is there any evidence of recent forced sexual intercourse? Yes. If there is, yes, no. Number one, you have taken the swab, it might come positive. If it becomes positive and there are no injuries on the body, that does not mean that there is no rape. As I explained, she could have been incapacitated to even resist because of psychological trauma or threat of any weapon or whatever. Yes. So our always remember, rape, balatkar is not a medical definition, it's a legal definition. You should never say, and even if they ask you, madam bataiye rape hua ya nahi hua hai, ye mera kaam nahi hai. मेरा काम है बताना, is there any evidence of recent forcible sexual intercourse? Number one. Sir, and you have collected with due apology, sir, with due apology, with due respect, इस पे मैं और आप बिल्कुल इन एग्रीमेंट हैं, कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन पाकिस्तान ने, मुझे इंडिया का नहीं पता, वो अदालत लेडी डॉक्टर साहबा को बुला लेती है कि आपने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं सजा कैसे दूं। डॉक्टर साहबा ने जिन्होंने सवाल किया है वो पूछना ये चाह रही हैं कि स्वैब भी नेगेटिव आ गया है, इंजरी भी नहीं है, हिस्ट्री है, तो शुड शी राइट दैट देयर इज नथिंग टू कमेंट that any sexual act has occurred related to that incident? What should she write on the medical legal certificate? Again. Suppose एक लेडी आती है 100 घंटे के बाद इंसिडेंट्स के, उसके बॉडी पे आपको कोई इंजुरी नहीं मिली. Yes. राइट? आपने स्वैब लिया, स्वैब निगेटिव आया, और या फिर वो 24 घंटे के अंदर आपके पास आती है, उसके बॉडी पे कोई इंजुरी नहीं है, आपने स्वैब लिया, स्वैब निगेटिव है, और आपने हिस्ट्री में पता किया कि उसने कंडोम यूज किया था. राइट? तो जज साहब को कहना चाहिए, सर आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरी अपनी लिमिटेशन है, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है. ये लड़की ने कंसेंट नहीं दिया, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के कारण रजिस्टर नहीं कर पाई, ये आप उससे पूछ लीजिए.
मेरा काम है कि यदि वो 100 घंटे के बाद आई है, आई डोंट एक्सपेक्ट spermatozoa in her vagina, because if I get it, then I have manipulated it. Now, why there was delay in giving this history or complaining? That is, you have to look at it. However, there will be other evidences. As I said, अगर उसने कोई क्लॉथ यूज किया है जेनिटल स्वाइप वाइप करने के लिए, वो अगर आपको मिला है, उसमें आपको डीएनए मिल सकता है. अगर वो कहते हैं कि मेरी खेत में एक केस हुआ था सर, जहां पर कि बोला गया छत पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जहां पर कि रफ हार्ड एंड ब्लंट रफ सरफेस था कंक्रीट वाला. मेरे पास आया, हमने देखा उसके बैक पे सीवियर ब्रूजेस एंड एब्रेजन्स. वो आई हमारे पास में 8 दिन के बाद, हमने उसके फोटोग्राफ लिए, टाइम सिंस इंजरी किया, एंड व्हाट वी सेड, the findings are consistent with the history that she was assaulted so many days back. Negative mean that rape has not happened. Sometimes, see, what is the purpose of medical legal examination? Again, sir, we had to support the either support or deny the versions of victims account. नाउ अगर 1 साल पहले हुआ था मुझे नहीं मिलेगा, 6 दिन पहले भी हुआ तो भी नहीं मिलेगा. ये जज को बताना पड़ेगा कि सर ये पॉजिटिव आया तो ये तो मैनिपुलेशन दिखेगा. तो समटाइम्स माय नेगेटिव इज आल्सो पॉजिटिव फॉर द प्रोसिक्यूशन, बिकॉज माय फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट विद द वर्जन ऑफ विक्टिम. नाउ देयर विल बी सीसीटीवी कैमरा, कोई वो अंदर गया आया, उनका एसोसिएशन, उनकी बाकी चीजें आप देखिए. जस्ट मेडिकल ऑफिसर ही आपको नहीं बता सकता कि रेप हुआ या नहीं हुआ. रेजिस्टेंस नहीं था इसका मतलब कंसेंट नहीं था, ये नहीं है. और अगर वजाइना में हमको स्पर्म नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि इजैकुलेशन नहीं हुआ था. और हो सकता है कंडोम यूज किया हो, या फिर शी केम टू लेट टू गेट द स्पर्मेटोजिया. एंड एज आई सेड, इन केस ऑफ माइनर्स, there was mechanical lesion to even penis at the time of happening due to resulting into vaginal tears, and there is no ejaculation. Therefore, and the law doesn't require somebody to ejaculate to prove that it was a rape. So thank you, sir. Thank you. Any other question, Tala, please? Sir, I have a question. Yes, Betty. अस्सलामुअलैकुम सर. सर डॉक्टर मरियम फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी. सर मुझे ये पूछना था कि जैसे सर हारिश ने अभी कहा है कि हम जो फाइंडिंग्स आती हैं जब केस पुराना होता है, तो हम फिर उसको एंड में ये लिख दें कि इंजरीज या इंजरीज पैटर्न आर कंसिस्टेंट विद हिस्ट्री ऑफ द विक्टिम. मतलब जब हमारे पास कोई फ्रेश इंजरी लोकली नहीं है और जो डीएनए का भी हमें चांस नहीं है कि वो मिलेगा, 5-6 दिन पुराना केस है. इसका मैं प्रोफेसर साहब से कहता हूँ वो इसका जवाब दें. बाद में डॉक्टर मरियम, मैं फिर इस पे कमेंट करता हूँ. जी सर. जी सर. सर ये मेरे को थोड़ा सा बता देंगे, इज इट द सेम क्वेश्चन या इसमें क्या इन्होंने डिफरेंस पूछा है? इन्होंने पूछा ये है कि मरियम आप बोलो. जी सर, ऐसे मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने अभी कहा कि एक आपको विक्टिम मिला था जो छत पे था और उसकी बैक साइड पे ब्रूजेस थे और ये वो, तो सर मैं ये पूछ रही हूँ कि लोकली अगर नहीं है कोई भी इंजरी वगैरह, मतलब मैरिड है फीमेल फॉर एग्जांपल, तो लेकिन उसको बाकी मतलब वो हिस्ट्री ये दे रही है कि मतलब मेरी बैक पे मतलब सारी इंजरी वगैरह हैं, कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर सीन ऑफ क्राइम था इस तरह का, तो सर आपने कहा कि हम फिर उसको हिस्ट्री के साथ कर देते हैं कि हिस्ट्री मतलब इंजरी पैटर्न इज कंसिस्टेंट विद हिस्ट्री. तो सर हम ये फिर हम ओपिनियन में ये मेंशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल. एक देखिए, 2 चीजें हैं. द फिजिकल इंजरी फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम और सर्वाइवर are consistent with the history given by her of being assaulted on a hard and blunt rough surface. Okay, number 1. Number 2, the absence of vaginal, we cannot, we don't even collect the vaginal swab because you do not expect after due to the delay of reporting. Number 3, if they ask, बहुत ही ज्यादा पूछते हैं तो then we have to give in double negative format.
that there is nothing to suggest that she was not sexually assaulted. Right. Right? I am Right. not you, sir. Thank you. Thank you. That sentence is the essence of today's presentation, that there is nothing to suggest that she is not assaulted. Yes, Dr. Kiran Rashid, you have raised your hand. You please ask your question. Sir, I am Dr. Arif Rasheed from Hyderabad PHU Hospital. Sir, I want to ask if pelvic examination should be done by the gynecologist or the women medical officer. Because in our hospital, many a times we are forced to do all these things. See, it depends upon the availability. Remember, we always say अमेरिका में क्या होता है, इंग्लैंड में क्या होता है. अमेरिका में तो नर्स एग्जामिन करती है, क्योंकि उनको लगा कि यार इतना पैसा कौन खर्चा करेगा कि डॉक्टर को रखेगा इसके लिए. उन्होंने लॉ ऑफ एविडेंस ही चेंज कर दिया. तो यदि मेडिकल ऑफिसर भी सिंसियर है और सेंसिटाइज है तो वो भी एग्जामिन करेगी तो भी बहुत ठीक है. गायनेकोलॉजिकल इश्यू हो, लोकल कुछ इश्यू हो, वो भी शी कैन टेक केयर ऑफ, बट ऑलवेज प्रिफर. और अगर कोई लेडी यानी साथ में साइकेट्रिस्ट आएगा तो और बहुत अच्छा है. फॉरेंसिक मेडिसिन वाला भी साथ हो जाता है तो एक्सेलेंट है. But depends upon what kind of infrastructure and human resource is available. You have to use optimum use of. But even a medical officer, well trained and sensitized into the subject, is also very good enough to do the examination and collect evidence. Yes, एक 459 से एक आ रही है request. You please unmute and ask your question. हेलो अस्सलाम वालेकुम. सवाल पूछें. It's Dr. Nargis from THQ Muridkia. So would you kindly explain something about the vaginal examination and something? S9, please ask your question. Hello. इनका शायद कनेक्शन का इशू है. डॉक्टर तला. सर हमारी तरफ से, हमारे एंड से कनेक्शन बिल्कुल ठीक है. एनीबॉडी एल्स हु वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, प्लीज रेज हिज हर हैंड. यस प्लीज मैम, प्लीज पूछें अपना क्वेश्चन. हमें आवाज आ रही थी आपकी. डॉक्टर अक्सा, आपकी बाद में बारी आती है. डॉक्टर अक्सा, यस यू प्लीज नाउ अनम्यूट. वो नहीं बता रहे ना, ये नहीं बता रहे. ये डन स्पीकिंग. डॉक्टर अक्सा, यू प्लीज अनम्यूट नाउ. Dr. Aksa Javed. Anybody else? Anybody else who want to ask any question? हेलो हेलो. ये चीजें हम पे बताएगा तुम्हें क्या अच्छा जी जी बताएं मैम, बताएं. कम से कम किसी फीमेल से पूछो. हेलो. जी मैम. बताता ना यहाँ पे कि ये चीज ही ऐसी है जो तुम्हारे मुंह में. जी मैम बताएं अपना क्वेश्चन. मेरा तो जी जी बताएं. सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी. प्लीज रेज योर क्वेश्चन. सर मैं डॉक्टर तिया मरियम ही बात कर रही हूँ. पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो एक और मुझे कंफ्यूजन है कि समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास रेप केसेस आते हैं, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें ये भी है कि अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की, तो हमें मतलब यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाना पड़ता है, तो वो भी कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है. तो उसमें मतलब फिर नेक्स्ट हमने क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है? वही मतलब फाइनल ओपिनियन को भी लेके, और नेक्स्ट हमने उस चीज को क्या, एक तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते ही हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अब अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, फॉर एग्जांपल उसकी 1 मंथ की है, तो उसमें हम जो विक्टिम है उसको क्या गाइड करके भेजेंगे कि इन केस मिसकैरेज हो जाता है तो मतलब वो उसके रेमनेट्स लाएंगे. इसमें हमारा क्या नेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा? Yes sir, please if you want to elaborate it.
Dr. Sahab, can you please again repeat your question, please? जी सर, मैंने ये क्वेश्चन किया है। जिस तरह कुछ विक्टिम्स आते हैं तो हमारे प्रोटोकॉल में ये भी होता है कि हमने उनका यूपीटी करवाना होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो समटाइम्स ये होता है कि कुछ का वो पॉजिटिव आ जाता है, मतलब कुछ अनमैरिड भी हैं जिनका पॉजिटिव आ जाता है। तो उसमें एक तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए उनको रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं, लेकिन फर्दर हमने फाइनल ओपिनियन को लेके या उनको क्या काउंसलिंग करनी होती है कि इन केस मिस कैरेज को लेके या डिलीवरी तक उन्होंने वेट करना होता है, इसमें क्या गाइडेंस है? जी इसमें कैन आई आंसर? हाँ, ये अक्सर आता है। तो इफ इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेप द प्रेगनेंसी नेचुरली, then she has to undergo abortion, and ये हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और पुलिस जब भी आपके यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में उसको ले जाएगी, तो दे ऑलवेज रिक्वेस्ट, दे आर गाइडेड that product of conception may be preserved and sent for DNA examination, क्योंकि उसमें और उसके बाद उस अक्यूज का भी हम लोग ब्लड ले लेते हैं, विक्टिम का ले लेते हैं, और वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन भेजा जाता है और उसमें मैच अगर हो जाता है, इफ शी इज अ माइनर देन इट्स अ स्टैट्यूटरी रेप, सीधा प्रूव हो जाएगा, और एटलीस्ट यानी इट बिकम्स अ वेरी गुड एविडेंस। तो जब भी उसको समटाइम्स इट हैज हैपेंड दैट विक्टिम सेज दैट मेरे को अबॉर्शन नहीं कराना है। हेलो, कैन यू हियर मी? सो समटाइम्स शी सेज मुझे नहीं कराना है, and if she doesn't want to for whatever reason, it's her choice, you can't insist upon it. Then at the time immediately after the delivery you have to take the like blood. हम लोगों को तो that time we have to take help of a neonatologist because everybody cannot take blood of that baby, और मदर का लेके फिर then we send an accused का we send for DNA examination, but 99% of the times it is aborted fetus। यानी मेरे यहाँ तो महीने में एक बार ऐसा होता है कि हम लोगों के यहाँ आता है वो क्या कहते हैं, वो एक बॉक्स, आइस बॉक्स में डाल के वो सीधा पूरा के पूरा फिटस हम लोग भेज देते हैं इनके पास FSL में। समटाइम्स इट्स 3 महीने 4 महीने 5 महीने का बच्चा है, अबॉर्शन हो गया या बड़ा है थोड़ा, देन वी सेंड फीमर बोन बच्चे का निकाल के for DNA examination, but it is always preserved, and अगर पूरा के पूरा concept of product of concept भेजना है तो उसको सील करके आइस बॉक्स में, the team of gynecologists who have done it, they have to seal it, they have to fill a form, because again it's a question of chain of custody, and they have to hand it over to the police, which is to be immediately taken to the forensic science laboratories. And कहीं भी उसके अलावा और कुछ करने का हम लोग कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं। बट यस, रिमेंबर दैट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट इज द कंसेप्शन इज अ वेरी गुड एविडेंस दैट शैल प्रूव और डिस्प्रूव द एलिगेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर नसीन एहसान, HOD फॉरेंसिक मेडिसिन, शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज लाहौर। मैं इसमें सिर्फ एक बात ये ऐड करना चाहूंगी कि बीइंग द मुस्लिम कम्युनिटी हमारे यहाँ पे ये इंडिकेशन नहीं है अबॉर्शन की। अगर वी फाइंड दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट, उसकी हम अल्ट्रासाउंड जरूर कराएंगे, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम नोट कर लेंगे, कोइंसाइड करेंगे उसको विद द इवेंट, आइदर दिस प्रेगनेंसी इज ड्यू टू दिस इवेंट, और इफ द person is married and this pregnancy is running before that event, तो उसको तो उससे हम अल्ट्रासाउंड से कोइंसाइड कर लेंगे। बट बेबी को अबॉर्ट करना जो है वो हमारे लॉ में प्रोहिबिटेड है, और ये थेराप्यूटिक इंडिकेशन नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है। Dr. Nasreen, let me comment on that, please. I honor your opinion. लेकिन हमारे क्योंकि किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस जो कि अब पाकिस्तान पीनल कोड का हिस्सा बन चुका है, उसमें 2 टर्म्स हैं, एक अस्काते जनीन है और एक अस्काते हमल। अबॉर्शन की एज सच कानूनन इजाजत नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट वेयर द लाइफ ऑफ द मदर हैज टू सेव। वहां पर इसकी गुंजाइश उन्होंने रखी हुई है।
where the life of mother has to save in good faith. तो ये एक सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है. अदरवाइज यू आर राइट कि पाकिस्तान में अबॉर्शन इज इलीगल. लेकिन सर इसमें ये है कि ये जो अबॉर्शन है इससे मदर की लाइफ को तो कोई खतरा नहीं है, सिर्फ इसके कि वो बस उसकी एक चैसिटी को जो पहुंचेगा, उसके अलावा लाइफ तो उसकी थ्रेटेंड नहीं है. देयर आर सम ओकेजन्स, वो कानून में लिखा हुआ है. ये क्योंकि हमारा इसमें इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है. उनका जो हर्ट का उनका जो सेक्शंस थे, सिंपल, ग्रीवियस, डेंजरस टू लाइफ और बाद में ये, वो हमारे ज़ियाउल हक साहब के दौर में एक सास एंड दियत ऑर्डिनेंस इन 1990 इनेक्ट हुआ था, जो फिर बाद में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट बना 1996 में, और फिर ये पाकिस्तान पीनल कोड का एक हिस्सा बन गया. उसमें हम इसको अगर देखें तो लिखा हुआ है टू सेव द लाइफ ऑफ मदर इन गुड फेथ. लेकिन इस वक्त हम अपने इस टॉपिक पे रहते हैं. जनरली आई एग्री विद यू कि इन ए ब्रॉडर कंसेप्ट जो है, जो हमने जब किसी को इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताना होता है, तो अबॉर्शन इज इलीगल इन पाकिस्तान. सर हमारे यहाँ भी जब 1971 में पास हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसमें काफी ह्यू एंड क्राई हुआ था. लेकिन ये जो केस है, इसमें जैसे हमने कहा कि अगर बच्ची माइनर है या मेजर भी है और वो अगर अनमैरिड है एंड इट्स अ प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ रेप एंड अ क्राइम, तो उसका बच्चे का पैदा होना और उसके बाद में वो उसको लेके कहाँ जाएगी, क्या करेगी, तो उसलिए इट इज इंटरनेशनली कंसिडर्ड एज ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यू शुड अलाउ दिस. लेकिन अब वहां पर जो भी लॉ होगा, यू नो बेटर देन लाइक मी, आई एम अ ignorant person about this. That we agree upon that every state has its own statute, law, rules and regulation, their own dynamics of society, religious, ethical जो कदरें हैं वो different हैं. इसलिए मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा debatable मामला नहीं है. That differs from society to society. And if the law does not permit, then you have to make aware the victim that भाई जब भी डिलीवरी होगी, she has to inform the police, और बच्चा जब पैदा होगा तो उस समय उसका ब्लड लिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए और whatever. Exactly what I am going to insist upon this one, that बच्चे को जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हम अबॉर्ट नहीं कर सकते. और डॉक्टर आरिफ की बड़ी अच्छी वर्जन है कि ये तो उस वक्त ही डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन जब बच्चा फाइनली डिलीवर होता है, हम उसको बिल्कुल भी ये मतलब जब पेशेंट हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आई है तो हम उसे ये ऑप्शन कभी भी नहीं देंगे कि आप इस बच्चे को अबॉर्ट कराएं. और जब वो फाइनली डिलीवर होगा तब उसका हम डीएनए एनालिसिस करवा सकते हैं. थैंक यू सर. Well, ma'am, I would like to share one of my experience which had happened about 2 months ago, in which Professor Harish has just raised our point that we have to take the biological sample of DNA once the baby gets delivered. Well, in that regard, the court had ordered to take a villus sample, and the case was of Kahrod Paka, that is a tehsil, which whose divisional headquarters is at Nishtar Medical College, Multan. So the case was referred to Nishtar, and at Nishtar there was no gynecologist available who could take the villus sampling, done the villus sampling. So the case was referred to BVH at Bahawal Victoria Hospital, Bahawalpur. We had the expertise over here, and my assistant professor and one of our gynecologists, renowned gynecologists, they had taken up the sample of villus, and afterwards the DNA was generated. Yes, there is availability at some places where villus sampling can be done before the delivery of a baby. But as Professor Arif has rightly said, and Professor Nasreen has said, that we have no bylaws available yet in our country that sell illegitimate babies
can be delivered before the term pregnancy is over. Thank you very much. पहला इसमें I just got an information. मैंने इसको फौरन ही गूगल किया. हेडिंग है लीगल स्टेटस ऑफ अबॉर्शन इन पाकिस्तान. 1990 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिवाइज किया कॉलोनियल इरा पिनल कोड 1860 को रिगार्डिंग अबॉर्शन, और 1990 के इस रिवीजन में condition for legal abortion depend on the developmental stage of the fetus, that is whether the fetus organs are formed or not. Islamic scholars have usually considered the fetus organ to be formed by the 4th month of gestation. Before formation of the organ, abortion are permitted to save the woman's life or in order to provide necessary treatment. After organs are formed, abortions are permitted only to save the woman's life. Present जो status है पाकिस्तान में वो यही है, subject to save the woman's life or to provide the treatment in good faith. The term good in good faith has also been defined in the Pakistan Penal Code and in the Indian Penal Code. So यहाँ पर कंसेंट के साथ मर्जी से नॉर्मल हेल्दी फीमेल लेजिटिमेट या अलेजिटिमेट किड के साथ जाके ये नहीं कह सकती कि जी मेरी अबॉर्शन कर दें. यहाँ पर अबॉर्शन इन प्रिंसिपल मना है अनलेस अनटिल ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, ये लीगल प्रोविजन जो है वो ये है. Yes, yes, बिल्कुल. Anybody else? Dr. Maria, you have raised your hand. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं डॉक्टर मारिया हूँ. सर मेरे दो सवाल हैं. एक तो सर ये है कि इफ अ फीमेल presented after the sexual assault and she is menstruating at the time of examination, are we gonna take her samples or swabs at that time or not? और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर फीमेल जो है रिपोर्ट करती है सेक्सुअल असॉल्ट, तो जो हमारे स्टेप हैं, मतलब पहले वो पुलिस को रिपोर्ट करती है, तो पुलिस को जब रिपोर्ट करती है तो उनके हैंड पे अगर लेट होता है तो मतलब वो हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इतनी लेट आए कि 72 आवर्स और 96 आवर्स जो हैं वो गुजर चुके हों, तो फिर सर उसका क्या कैसे डील करेंगे? मतलब वो फीमेल जो है वो तो फौरन मतलब प्रेजेंट की है पुलिस के पास, लेकिन हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो लेट हो रही है सिर्फ एट द हैंड ऑफ पुलिस की वजह से, तो उसमें सर उसका वो वीक नहीं हो जाएगा उसका पॉइंट? कैन आई आंसर? यस सर. यस. देखिए आपके पास जैसे ही कोई विक्टिम आई है, वहाँ के अलावा मैं नहीं जानता. हमारे यहाँ पर वी डोंट इवन हैव टू वेट फॉर द मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी ऑफ, वी हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस. They making FIR and coming to you for taking her statement. It may take time, but we cannot delay our examination. If she has reported to us on time, we have to examine immediately. After informing the police, it is critical. Number one. Number two, if police has delayed it, then it's not your responsibility nor your accountability. So it's their mistake. However, the moment girl comes to us, we have to examine as soon as possible, but you have to inform the police. Police will take their should not take their own time. हमारे यहाँ तो immediately आती है. यदि नहीं आती है तो it is their mistake, and nobody can say that why didn't you wait for police to come before you started the examination, because you did what you were supposed to do. I think this is the law and practice in India. Professor Rasheed can tell us. पाकिस्तान में ये है, वी हैव वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006, जिसमें मजिस्ट्रेट या जुडिशल कोर्ट में जाके खुद ये स्टेटमेंट देनी होती है कि ये हुआ है. मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है मुतलका पुलिस को भी और मुतलका हेल्थ फैसिलिटी एग्जामिनेशन कराया जाए. लेकिन इसके ऊपर हमने बीइंग मैंने सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब in collaboration with health department, law department and prosecution department,
कोई गाइडलाइंस हम बना रहे हैं कि मौके पे उसका एग्जामिनेशन होके एविडेंस कलेक्ट हो जाए, ये वाली फॉर्मेलिटीज पूरी होती रहें ताकि एविडेंस लॉस ना हो। और लेकिन पाकिस्तान में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने कोर्ट में जाना होता है पहले। ये डिले वाला मामला डॉक्टर साहब का ठीक है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि इसमें इनका फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। बहरहाल हाँ वो अच्छा सर, दूसरा क्या होता है कि जैसे आप बना रहे हैं ना, गर्ल में नॉट बी इन ए पोजीशन टू गो टू कोर्ट, उसको वजाइनल ब्लीड हो रहा है, शी हैज लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, विल शी गो टू कोर्ट और विल शी कम टू यू? नाउ सी वी हैव टू बी, एज वी सेड that she is a walking talking crime scene having critical biological evidences materials which are deteriorating fast, so it should be therefore please. हाँ, therefore like हमारे यहाँ पर भी किया गया है कि भाई लीगल फॉर्मेलिटीज होती रहेगी, पहले एविडेंस कलेक्ट कीजिए। That is right, sir. I am trying in collaboration with the department कि हम ये लीगल फॉर्मेलिटीज को सेट असाइड करके जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट है उसका मैकेनिज्म डिवाइस कर लें। Though the progress is a bit slow, obviously due to the corona pandemic, because a lot of the resources, energy, times has been diverted to that. But I think a lot of work has been done, and unofficially in my discretionary authority, मैं उसका burden भी लेने को तैयार हूँ। I have advised the women medical officers कि आप केस की इतला कर दिया करें मुतलका पुलिस को, लेकिन आप उसका एक फाइंडिंग नोट करके कलेक्शन कर लिया करें ताकि अगर बाद में वो आपके पास कोई अथॉरिटी लेके आए तो वो एविडेंस लॉस ना हो। ये मैंने उनको एक गाइड किया हुआ है, लेकिन इसको लीगलाइज करने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट है उसकी प्रेपरेशन अभी अंडर प्रोसेस है। जी सर, बहुत जल्दी हो जाएगा सर, आपका एफर्ट्स को सक्सेस मिले। डॉक्टर बुशरा। और सर कोरोना का क्या तो यहाँ पर इज इट लाइक थर्ड वेव यू आर एक्सपीरियंसिंग? Sir, we are experiencing fourth wave, but I have read the news few days ago that now there is a lambda variant. Delta variant have 2 per million death, and the lambda variant has 1200 per million death. लेकिन मैं सबसे पहले मुझे ये शुरू में ही कहना चाहिए था कि we being a human being, as a doctor, as a medical fraternity, all with India, and we pray to Allah Almighty कि अल्लाह हम सबको उसमें महफूज रखे और कोई कुदरत की तरफ से ही इसमें कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि ये ह्यूमन बीइंग का या और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका उसमें नुकसान ना हो। लेकिन मैं ऑन ए वेरी लाइटर मूड, इतनी सीरियस डिस्कशन के बाद मुझे सिर्फ एक इजाजत दे दें। जितनी कोरोना की बेइज्जती पाकिस्तान या इंडिया ने की है, ना उन्होंने शॉपिंगें बंद की, ना शादियां बंद की, ना कोई गैदरिंग्स खत्म की, यानी वो कोरोना खुद ही इतना बगैरत है कि यहाँ अभी तक है, वरना हमने उसको लिफ्ट कोई नहीं कराई, उसको खुद ही गैरत के मारे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया में मेरा भाई है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मेरा भाई है, वहां पर सर दो एस्पेक्ट हैं। एक तो उन्होंने फोर्स नहीं की वैक्सीनेशन कि ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है, हम पहले इसके इफेक्ट्स देखेंगे। लेकिन लॉकडाउन में मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द टू लीडिंग कंट्रीज जिन्होंने लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और पब्लिक ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। जो कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं कहीं एहतजाज हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोरोना ने सर एक चीज तमाम इंसानों को बता दी है कि जिंदगी की रियलिटीज कुछ और हैं और हम किसी और तरफ जा रहे थे। एब्सोल्युटली, यानी मॉडर्न साइंस की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस को 150 साल हुआ है और हम लोग अपने आप को बड़ा तोप समझते थे बिकॉज ऑफ 3 इन्वेंशन, वन इज वैक्सीन, अनदर इज एंटीबायोटिक एंड थर्ड इज एनेस्थीसिया।
इसी कारण हम लोग, नहीं तो ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेडिसिन जो थे, दे वेर वेरी गुड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ये तीनों चीजें फेल हो गई इसमें. And the Makkah of modern medicine, Italy and US, they suffered the maximum. So हमको तो जमीन पे ला के रख दिया है. ये तो बात है सर. मैंने जैसे बताया, मुझे डीन अपॉइंट किया है. Since 3 months we are building one 2000 bedded dedicated COVID care hospital यहाँ पर बॉम्बे में, and it should be ready by 15th of this month. And वैसे like we have 10,000 jumbo COVID facility beds. And we are having not even 500 patient right now. We are building another 6,000 so that agar तीसरा चौथा wave आया तो we are ready. So like we are gearing ourselves for the war. We call doctors corona warriors. So we are getting ready for the war. सर आप फोरेंसिक मेडिसिन के हवाले से लकी हैं कि आपको डीन बनाया है. हमारे यहाँ ये काम इन्फेक्शियस डिजीज और पल्मोनोलॉजिस्ट के जिम्मे है. लेकिन इन माय पर्सनल कैपेसिटी मैंने कोई एसओपीज डेड बॉडी की मैनेजमेंट के और एक एडवाइजरी बना के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दी थी. और बाकी जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है काम करते हैं. मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, तला कोई टाइम कंस्ट्रेंट है. मेरा ख्याल है कि हम प्रोफेसर साहब को अखलाकी मरवत में बहुत ज्यादा कीमती टाइम है उनका. तो मैं कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दूं? हाँ प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज. प्रोफेसर हारिस, मैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, Prakinji fibers of my heart, I am thankful, grateful, and I am wizened. Participants are wizened, and I owe a lot to you. मेरा ख्याल है कि हमें इस किस्म के वेबिनार सेशंस कंटिन्यू रखने चाहिए ताकि हमें एक दूसरे के लॉज और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको समझने में मदद मिले. और ये जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं ये भी वाइजेंड हों. कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो मैं अदा कर सकूं जो आपके इस कीमती वक्त का शुक्रिया अदा कर सकें. बट आई एम हम्बल्ड, ग्रेटफुल. Thank you very much, sir. Thank you very God much. bless you. Sir. Thank you all the participants. Thank you all. Thanks. Thank you. Thank you.